Hello guys, this is Sukhda Kotak this side from EduCARE. वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर डेली करंट अफेयर वीडियोस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 25th and 26th October 2022. Before starting with the current affairs for the day, don't forget to follow our Instagram channel Be EduCare Official. साथ ही साथ ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सो दैट आपको रेगुलरली एग्जाम के रिलेटेड सारी न्यूज की वीडियो लिंक्स मिलती रहे। साथ ही साथ हम लोग क्विज डेली बेसिस पे कंडक्ट करते हैं सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड विद द करंट अफेयर्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज फॉर द डे, इसरो ने लॉन्च किया है LVM-3M2, first commercial mission to place all the 36 satellites into the intended orbits. ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर सरिहकोटा आंध्र प्रदेश से। म्यांमार को ऐड किया गया है हाई रिस्क कंट्रीज में बाय द FATF. FATF इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने म्यांमार को अपने इस हाई रिस्क कंट्रीज जिसको ब्लैकलिस्ट भी बोला जाता है उसमें ऐड कर दिया गया है। ये लिस्ट में स्ट्रैटेजिक डेफिशिएंसी रेजिम्स जिस कंट्री में होती है जिनको मनी लॉन्ड्रिंग को काउंटर करना है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को काउंटर करना है और प्रोफिलियरेशन फाइनेंसिंग को काउंटर करना है, इस लिस्ट में इस कंट्रीज को ऐड किया जाता है। म्यांमार तीसरी ऐसी कंट्री है अलोंग विद नॉर्थ कोरिया एंड ईरान जो इस लिस्ट में ऐड की गई है। The city was added to the FATF list of the high-risk nation for its failure to mark the strategic deficiencies as committed by it in February 2020. ऋषि सुनाक ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और बन गए हैं पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सुनाक ने सक्सीड किया है ये थ्रोन आफ्टर लिस्ट ट्रस्ट ने रिजाइन कर दिया विद इन 45 डेज ऑफ हर अपॉइंटमेंट एंड बन गई थी उस टाइम पे द शॉर्टेस्ट रूलिंग PM। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अमन शेरावत बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेसलर जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये पहले ऐसे इंडियन हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया स्पेन में। ओलंपिक मेडलिस्ट जैसे कि बजरंग पुनिया एंड रवि कुमार दहिया ने फाइनल कैटेगरीज में अपना जो है एडिशन किया था बट वो सिर्फ सिल्वर मेडल ही जीत पाए। साइक्लोन हिट किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने इवैक्यूएट करने का ऑर्डर पास किया है फॉर द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द पाथ ऑफ अ साइक्लोन जो हेड कर रहा था टुवर्ड्स द डेंसिटी पॉपुलेटेड फ्लो फ्लोइंग कंट्री। अप्रोक्सीमेट 33,000 रोहिंग्याज रेफ्यूजीज को म्यांमार से बुलाया गया था जो कंट्रोवर्शियली रिलोकेट किए गए थे मेनलैंड कैंप्स में जो एक स्टैंड प्रोन आइलैंड था इन द बे ऑफ बंगाल वर आल्सो एडवाइज्ड टू रिमेन इंडोर्स। ये साइक्लोन का नाम है स्त्रीरंग। कमिंग टू द डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 has been launched in which of the following state? The next question for the day is, what is the name of the mascot unveiled for the 2023 FIFA Women's World Cup? The next question for the day is, Asia's largest compressed biogas plant has been recently inaugurated in which of the following state or union territory? Please mention your answers in the comment box below. The person who is giving a correct answer will be given a shout out in the next upcoming video. Coming to the answers to the questions asked in the previous video, the first question was, what is the rank of India in the global research on the rise of the centimillennials? The correct answer is third. The next question is, India's first migration monitoring system has been inaugurated in which city? The correct answer is Mumbai. The next question is, what is the name of the new generation medium range ballistic missile which was recently test fired? The correct answer is Agni Prime. The next question was, which institution won the National Intellectual Property Awards 21 and 22? The correct answer is IIT Madras.
That's it, guys. Like this video and subscribe to our channel for daily current affair videos and more such examination updates. For classroom, live class, recorded lecture, books, ebooks facilities, contact on the number which you can see on your screens. For more such information, download the app from the link which is given in the description box below.